हेलो, आवाज़ आ रही है? आई गेस आवाज़ आ रही है। आई होप दिख रहा रहूँगा, क्योंकि सारी सेटिंग्स अभी करना बाकी है। क्लियर हूँ या नहीं हूँ, आई डोंट। हाँ, आ गया, मैं आ गया। हाँ, हो गया था टाइम एक्चुअली। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, सो आई वाज थोड़ा सा मैं उस कॉल के इमोशन में रह गया था। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट कम डायरेक्टली। एंड बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ख़राब मार्केट है, आई मस्ट से। I've not seen anything good enough to trade on it. So I have taken GBP JPY trade during London session and I have taken the loss, and यही है. Yesterday I have taken a loss during London and not getting any opportunity during New York, so I am drawdown now. And today itself only on GBP JPY I have taken a loss, and something is bad happening right now. So what we can do about it, just have to be in the moment. Okay, this is the POI that I wanted to take trade, but I need this POI to be mitigated at least to this EQ first. EQ zone तक आना चाहिए, then I only we going to take a trade on it, because वो FOMO entry नहीं होनी चाहिए, because I have taken a loss. So I have to be more cautious now to take a trade. सॉरी मैस्कुलाइन, सॉरी, एफएक्स हो गया था टाइम, बट होता है कभी कभी. सो जस्ट अ सेक. Firstly I need to see this 50% EQ mitigation, then only I will take a trade or look for the trade, because as you know, अगर मार्केट बहुत ही एग्रेसिव वे से डाउन साइड होता, देन आई माइट थिंक अबाउट इट टू टेक अ ट्रेड डायरेक्टली ऑन इट, but just waiting to see this to be filled first, because अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो है, तो उसको फिल करना है. और दूसरा चीज़, इस पीओआई पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहना है. रीज़न बिहाइंड इज सिंपल, देयर इज़ very nice equal above trend line liquidity build up there, so there are high probability that market can do this, sweep out everybody, and then it can come down. Yes, it could happen. So I'm just waiting for, you know price give me a good confirmation so that I can take it. There is nothing, there is no lid around here, so I need to see LC2A appear here, so I will take it. Otherwise I will just wait. Okay. uh,
The lesson that I learned from this one is that I was taking long from this POI, must say. On I'll show you the Discord GBP uh, GBP forecast, in which I mark this as my POI. See, this could be work as a decisional zone. It is more low probability to medium probability. क्यों low to medium था? Because H4 is hidden supply zone, so more land on the lower, it's so more landed on the lower probability. So if MTF give me the entry, I will take that, but keep in mind it will be lower probability. यहाँ से लॉन्ग देखने के लिए मैं बार बार इस एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था कि दैट इट विल बी अ लोअर प्रोबेबिलिटी. एक्सट्रीम में इट विल बी हायर बिकॉज द थिंग सिंपल. Internal order flow is bullish. Currently we are in bullish, swing is bullish. So when price come to mitigate the H4 POI, there is H1 last POI which is hidden supply zone, I must say. So ये मैं एक zone देख रहा हूँ for bullish move. But after that there is no H1 POI which is which is all of them are mitigated. So this is the last zone that I can look to long. So I will take that trade if opportunity presented during the NY session. Okay. I think there is a news, I must say. I have to see that. So just a sec. Yeah, there is a news around 6 p.m., but it will not affect the GBP which I am going to take trade on it if price present me any opportunity. As you can see here, if I am in a FOMO, I might take the entry from here itself only, but I waited to price to mitigate at least the 50% of the POI first. Then only I will look to see the lid and everything. So now what I need to say is that if the H1 did fractal break to the upside, then only I will look to long. Otherwise short will be higher probability. नहीं तो यहाँ से I will take that. Otherwise यहाँ पर there is, I don't find any good good lid or a good POI. So I might not take a shot directly from it, any of any from it. So I will just wait, because ये जो weak hidden supply और demand zone होते हैं, they are weaker. So I don't want to take trade on it. I have get the lesson, because before that I was considering this one as my demand zone for a long position, but unfortunately have taken a loss and price is moving inside here. So for that, for me to confirm that it's going up, I need to see the fractal break on H1. So I'm waiting for that to happen. So this was the fractal high that need to be broke first, and I will take the entry. Sorry, just shut up because I see that something is lagging. So I have to see correctly that it's कल मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, सेम टाइम, सेम. सो hope you guys get some value from that video. I will upload it tomorrow, same time around 6 p.m., which usually I posted some of my content. So
This will be the time that I will going to post it. See, yes, I don't think I have to consider this as internal, because the reason is simple. This is not the three lid momentum. So firstly, this was this. Just waiting. Session will be shorter. Session will be shorter. I don't think anybody's there to, so I think I have to on the screen, and अगर कोई messages होंगे तो I will reply to that. And देखो यहाँ पर I was thinking when the price was down aggressively, it's open here and down aggressively, that particular time some of the FOMO people, like including me, I am the one person that is FOMO sometime. So first of all I have to see the candle body close first. So ये चीज़ें अभी भी haunt me sometime. So let's see. बहुत ज़्यादा लैगिंग्स चालू हो गए हैं. Why it's happening? I mean, मुझे अपना लैग मिलता नहीं था पहले. देखिए 50% mitigation is important. Let's hop into our Discord group first, because in which where we can talk about, first we have to talk about क्या daily motivation quote. आज का क्या है? After a long streak of failures, you are still saying it's not over. Congratulations, welcome to the 1%. अगर बहुत सारे लॉस ले रहे हो फिर भी you are still in the game and you still want that, नहीं अभी ओवर नहीं हुआ, I will do that, तो then you are welcome.
to the successful 1% people that become successful in the future. So उस उसमें आपका वेलकम हो जाता है ना? तो ऑलवेज कभी हार नहीं माननी है, जस्ट सिंपल एज दैट. नेवर लूज फेथ ऑन इट. Always be, be in the moment, always be in the game, try to be in the game as much as possible. uh, okay, so now what I need to see is this. I need to see this fractal closed below, and just a second. M5 George. उसके बाद then I will look for that high to go, and then I will take the entry short. Okay, so I will just wait, patiently waiting to see price give me any kind of a reaction so that I can take the trade. But I am waiting because this is not the highest probability POI. As you can compare, this is the internal, this is not. This is just, maybe you can call this as a small internal. But what I am currently doing is that I have to follow the current order flow. That simple. So I am not going to go against of it, any of this. Agar if suppose price come to this and I don't want, I will not go for a long. That is the same, that is the thing. I will not look long from this POI. But for after the break of structure of any of the candle body close, if the structure is smaller than the previous one, I will follow the small structure. That is the idea for me, because I know I have taken so many losses to go against the, you know against the momentum, uh, against the trend, trends. So that's why I just, do some simple maths, simple data collecting, that's saying me that your phase B2, your phase D are not that well. I will show you the data so you guys can understand that. If you see my phases, where are the phases? Huh. See, A phase are welcome, but वो कभी अपॉर्चुनिटी जल्दी, वो ए फेज की अपॉर्चुनिटी जल्दी अपियर नहीं होती. एक सेकंड रुक, इधर आ. सॉरी, पता है ना, घर में करने से ऐसे ही होता है. आई एम नॉट एट माई स्टूडियो राइट नाउ, सो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. सो व्हाट वी कैन डू. Session will be shorter. Tomorrow I'm going to post a video, so hope you guys can enjoy from that particular video.
And if I move this one, does you guys see that or not? More important. So you guys can see it. I have to close this window. How to close it? How can I be the one? Has to be. Yes, M5 fractal break has occurred. So now what I need to do is
I'm back. घर में दिक्कत, screen not that looking great enough. So let's talk something. If this lid has gone, then I might take the short entry, but I will be more cautious because there is so much inducement build up above, and there is a unmitigated POI as well. So I might have, to be more precise with the entry that I'm going to take it if it present, but we just have to wait and see. Very aggressive push up to upside, and let's see, hope that will break and we can get our entry that we wanted. Otherwise it will be difficult for us to take an entry. uh, I think I have to, close the session right now. So much lagging. Very soon I will be purchase MacBook Pro. Very soon. I know why it's happening, but very soon I will do that because I know it's not handling that much, data at the same time. Uh,
After this candle close, 5 minute candle close, I will close the session because I don't find anything good right away. So yes, looking short is high probability on EU. EU में short high probability है. How many people are live and how many of them are left? Just to see the analyze. Current viewer 11 currently watching. 50 of them come and go. Like see this. अरे रे रे मैसेज आ रहे हैं बट आई कुडंट सी. मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ. हो गया उल्ला सर, मैं अपनी प्रॉब्लम फिगर कर ली है. मैं जब भी चार्ट पर बैठता हूँ तब गोल क्लियर होता है कि ये सेटअप क्या बनेगा तो ट्रेड लूँगा, बट आफ्टर सम टाइम ओवर थिंकिंग होने की लगती है. क्या करूँ सर जी, रिप्लाई दो. हेलो हेलो हेलो. सॉरी, एक्चुअली मेरी सेकंड स्क्रीन पे वेर आई लुक एट द स्ट्रीम, आई कुड नॉट सी योर मैसेज. एक्चुअली it's only showing first one. So I wait, I have to first I have to change this so that I might see the chat. Sorry, बॉय, शायद बॉय तुमने लिखा है या किसने लिखा है. हाँ, सॉरी आई कुडंट सी दैट मैसेज. आई एम रियली सॉरी माय फ्रेंड. सी, पहले तो अच्छी तरह से मेरे को इसको पढ़ने दो, समझने दो. व्हाट यू आर सेइंग इज सो दैट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू. फर्स्ट, सर मैंने अपनी प्रॉब्लम फिगर आउट कर ली है. वेरी गुड, दैट इज़ अ गुड साइन. मैं जब चार्ट पर बैठता हूँ तब गोल क्लियर होता है. ये सब सेटअप बनेगा तो ट्रेड लूँगा, बट आफ्टर सम टाइम ओवर थिंकिंग होने लगती है कि क्या करूँ. सर जी रिप्लाई दे. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप पहले एक सिनेरियो बनाओ कि आपको एवरी डे सेटअप नहीं मिलेगा. एवरी डे यू विल नॉट गेट, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है एग्जैक्टली, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. यहाँ ठीक है, आप ओवर थिंकिंग करते हो. ओवर थिंकिंग इंसान है, हम करेंगे ही, उसको हम वो नहीं कर सकते. नहीं भाई, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ माय फ्रेंड. मैं तो वेट करता हूँ तुम लोग का. व्हाई आई एम गोइंग टू इग्नोरिंग यू. आई जस्ट कुडंट सी द मैसेजेस, दैट्स व्हाई. सो first of all you have to tell me that what is the problem that you are facing. I mean, you over trading because of the overthinking. Does you do over trading और you, मतलब आप वेट नहीं कर पा रहे हो आपके सेटअप का, या फिर अगर आप कोई ट्रेड में आ रहे हो तो उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो. आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है. ओवर थिंकिंग आई कैन अंडरस्टैंड. ओवर थिंकिंग सब लोग करते हैं. वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट ए आईज. ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जस्ट टेल मी सो दैट कुछ उसमें हम, मैं अपनी एक्सपर्टीज को इंडल्ज कर सकूँ. टेल मी, आई एम वेटिंग. आई, देर इज अ लेटेंसी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट टेल मी योर प्रॉब्लम सो दैट आई कैन आंसर इट. हेलो उंगा मांगा, कौन है भाई ये. हेलो 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 हेलो. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस, लाइव चैट्स, top messages and everything. That's why I couldn't reply on that. And currently I'm just, you know, waiting for the opportunity to be presented, then only I will take the entry. Boy, we are talking about. So tell me your problem. I mean, I'm fully committed to this one. What you are saying is chart. सर लाइव चैट का रिप्लाई दे दो. अच्छा, दैट्स यू टेलिंग. सॉरी, वो टाइम पे मैंने देखा नहीं था. So now I'm seeing this.
I'm waiting for your reply. Still not. Okay. Still you don't reply or I couldn't see. अरे यार ऐसा ना हो यार, आज ऐसा ही हो रहा है. एक सेकंड, आई थिंक आई हैव टू गो टू दिस एंड ओपन दिस वन. अभी तक आपने मैसेज कर, हाँ नाउ यू सेड इट. सो वार्निंग क्या आ रही है भाई, वार्निंग क्या आ रही है? जस्ट टू सी द वार्निंग. द स्ट्रीमिंग करंट बिट रेट इज लोअर देन द रिकमेंडेड. ओके भाई, अभी मुझे पता नहीं है वो क्यों है. So I just have to ignore that. And now seeing your message, I'm stuck in a kind of frustration zone. Like for example, I'm waiting for my setup for a week. Then I got my setup on two pairs. Both of them were absolutely perfect according to my setup. But I take my entry on which? किस में लिया एंट्री? आप M15 में ट्रेड करते हो राइट? M15 में it will take time for. अगर आप जल्दी जल्दी लिखो तो अच्छा रहेगा, मेरे को समझ में आएगा. या फिर आप डिस्कॉर्ड में लिख रहे हो तो भी आई कैन शो इट टू द पीपल, माई डिस्कॉर्ड चैनल एज वेल, इससे ऐड भी हो जाएंगे. बट जस्ट टेल व्हाट अ ब्यूटीफुल सेटअप दैट वाज. Euro JPY which end up in the CTC and other setup on gold which reach to my target. I'm like why? तो एक्चुअली में ये दो ही पेयर आप ट्रेड करते हो, यूरो JPY और गोल्ड राइट? और इसके अलावा कोई दूसरे पेयर्स नहीं है? जब first tell me, actually I don't understand your what you're saying exactly. थोड़ा क्लियर एक्सप्लेन करो. यस. फ्रस्ट्रेशन जोन में हो, यूरो JPY which end up in the city C and the other setup on gold which reach to my target. So क्या हुआ अगर एक लॉस हुआ, दूसरा वाला अगर आपने दो पेयर पे फोकस किया राइट, यू टेकिंग मतलब वीक वीक काफ़ी वीक से आप यू आर वेटिंग फॉर दैट सेटअप टू बी हैपन. सो आपने दोनों में से एक ही लिया जो लॉस लिया, या फिर आपने दोनों लिया? अगर आपने दोनों लिया दैट मीन्स यू टेक लॉस ऑन वन पेयर एंड गेट द प्रॉफिट ऑन अनदर. सो प्लस माइनस तो होता रहता है, जैसे कि फॉर मी. अच्छा ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये तीनों में से ना आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से देखनी होगी कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन देम, क्या कुछ मूवमेंट सेम आते हैं. अगर आते हैं तो यू हैव टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर पेयर, बिकॉज वो मूवमेंट की वजह से आप यू माइट टेक अ लॉस. मतलब अगर आप अलग अलग पेयर में एक ही बार में ट्रेड कर रहे हो तो द पोर्टफोलियो माइट बी इन अ व्हाट आई से इन अ ड्रॉ डाउन फेज. बिकॉज कहीं पे आप लॉस कर रहे हो, कहीं पे आप विन कर रहे हो, तो अल्टीमेटली या तो आप ब्रेक इवन हो जा रहे हो या तो फिर लॉस में रह रहे हो. प्रॉफिट इकट्ठा सारे पेयर्स नहीं देते हैं. तो मैं बोलूँगा तो चूज योर फर्स्ट टू, दैट्स इट. डू नॉट ऐड अ थर्ड वन. अच्छा गोल्ड में नहीं लिए थे, जिसमें लिए थे उसमें लॉस हो तो कोई बात नहीं ना.
कोई बात नहीं, मैं सिंपल एक बोल रहा हूँ, डिवाइड करो अपने ट्रेड्स को, मीडियम फर्स्ट, लो टू मीडियम एंड देन हाई टू मीडियम, ऐसे डिवाइड करो। अगर साइमल्टेनियसली आपको दोनों पेयर या तीनों पेयर में आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं, तीनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सा होगा। अगर वो लॉस भी होता है, नो इशू, जस्ट पुट इट इन योर जर्नल दैट व्हाई यू टेक द लॉस, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बिकॉज आप अगर वीकली वेट कर रहे हो तो इट्स फॉर यू, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर पोर्टफोलियो टू बी मोर वर्सटाइल। मतलब तीन पेयर है फॉर वेटिंग, इतना ज़्यादा लंबा लंबा वेटिंग है तो इट इज़ गुड एक्चुअली। बट आपको सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी गेम है। वाई वी आर नॉट टेलिंग दैट why we are telling high probability and lower probability, because it's a probability game. We might take a loss next trade, we never know। हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ए प्लस प्लस सेटअप भी लॉस होता है, ये ध्यान रखना है। इन अ लॉन्ग रन हम कितना प्रॉफिट बना पाते हैं वो एक्यूमुलेट होता है, तभी बनता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ से लॉस करो, वहाँ से विन करो, तो अल्टीमेटली ब्रेक इवन हो जाएंगे। लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन जो आता है आपको जस्ट वेटिंग की वजह से आता होगा, तो मेरे हिसाब से ट्राई टू फोकस वन और टू फर्स्ट, देन यू कैन ऐड अनदर वन। बट जितना मैं एक्चुअली सच बताऊं, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने फेस किया है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। यस, स्टार्टिंग में बिफोर 2 years बैक मैंने भी बहुत सारे पेयर्स को ओपन करके रखा था, ए यू जी बी पी जे पी वाई, यूरो, यूएसडी, गोल्ड, इवन सम टाइम बीटीसी, एंड मैं सब सेटअप्स देखता था एंड टेकिंग लॉस देयर एंड देयर। थर्ड पार्टी लॉगिन, डिड यू टुक दिस सीई? नो, आई डोंट, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, आई एम जस्ट waiting for this to be liquidated, then I might take the entry, but I'm currently waiting. GBP JPY, I have taken a loss, so I have to do the journal about it at night, so I will do that. Whatever the learning will be, I will post it on, I guess I will post this on my markup. I will post here today, definitely I'll do that. So post session markup will also be benefit for you guys. So सिंपल है, जितना छोटे लॉस रखोगे, जितने कम लॉस होते रहेंगे, उतना यहाँ पर। हाँ, इतना लंबा वेट किया, उसके से सोचा गोल्ड में क्यों नहीं लिया, वही बात है ना। ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे। सोचो कि हाँ, अभी न्यूज़ थी ना, राइट, 6 PM को देयर वाज अ न्यूज़ ना, जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक, इट वाज अ न्यूज़ event right away। Yes, that's why candle moved that much, I mean that way, and let's see। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, लंबा वेट करने से प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लाइक व्हाट आई से। मेरा वैसे तो मेरा इतना लंबा वीकली वेट नहीं होता है, बिकॉज आई एम एक्चुअली, मैं बोलूँ तो इवनिंग में ही मैं अपना क्लिनिक और वो डे केयर करता हूँ, आफ्टर अराउंड 8:30 और 9 till up to 12। So the thing is that in between I'm free, so when I couldn't find any setup throughout the whole day। I'm talking about the last year thing। मैं पूरा दिन नहीं देखता था, then what I did, वो फ्रस्ट्रेशन में दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, और इवन इफ आई एम गेटिंग इट, द confirmation is not presented। So what I did, I most of the time, end of the day, before I am going to shut the computer, before I am going for a clinic, I do a bad trades। मतलब मैं गंदे ट्रेड्स ले लेता था, गंदे एंट्रीज ले लेता था, जिसका मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही पछतावा होता था। तो वो एक चीज़ होती थी मेरे साथ। नाउ व्हाट हैपन,
Now this fractal break, which did a fractal break high, it's now swept. So what I need to do is that I have to wait first for, see, this candle is too big, so there is a high chance, because of the news momentum, it can go up. Okay, there is very high chance that it can go up. So because so much liquidity, that's why I was waiting. See, exactly same thing happened. So मैं क्या बता रहा था कि end of the day, before going to clinic, I just put it some bad trades, and at night around when I take a loss or something, तो उस वक्त मुझे रियलाइज होता था, बहुत लेता था मैं ऐसे लॉस। तो जस्ट बी पेशेंट, सेटअप आएंगे, just be truthful with your strategy. That's simple. I think session is quite long. और news भी आ गया. It did not do anything on GBP JPY, because it's not the news of JPY pair or GBP, it's a news of USD, so that's why it moves that much. Now what happened? This POI is invalidated for me. I will not look to trade this POI anymore. Okay, so what I will do is that I will wait for this to be mitigated, then I might take the entry to the downside. Okay, so I'm just waiting for that to happen. क्या लिखा? Absolutely forced trade, yes, yes, that's I am the situation means, जब मैं कॉलेज में होता हूँ तो घर आकर चार्ट देखता हूँ तो ट्रेड हाथ से निकल जाता है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तब सेटअप्स आते होंगे। ऐसा होता है भाई, बहुत होता है। इट्स नॉट, आप ही नहीं हो ऐसे यूनिक। ये चीज़ को एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये चीज़ को आपको ही फेस करना पड़ेगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दिया जो मेरी स्टोरी है, कि मैं किस तरह के बैड ट्रेड्स को एंटर कर जाता। देखो अभी मैं आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ आई एम होल्डिंग दैट अकाउंट, पर्टिकुलर 100 के अकाउंट सिंस लास्ट 3 months, why I am holding that? The reason is simple, because my losses are very small when I go to drawdown, because I know their loss a part of a game. It might come, but if I have taken a loss a very small after drawdown, there is a high chance that I will not lose that account. Yes, it is very difficult for me to get back to it, but losing that account is uh, like a negligible thing. So that is the thing. नहीं बनता था तो पूरा वीक फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार जब ट्रेड था तब मैं अवेलेबल नहीं था, जब था तब ट्रेड ही नहीं होता। इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यस, अंडरस्टूड। आप किस पे ट्रेड करते हो? M15 पे करते हो या H1 पे करते हो? आपकी एंट्री कहाँ होती है? जस्ट टेल मी अबाउट योर एंट्री। आई डोंट वांट टू नो about the analysis, about the multi time frame and everything. What time you do your entries? Tell me that, so I try my best to answer. Because अगर आप M15 में एंट्री करते हो तो आई कैन से श्योरली द वीकली में यू माइट गेट द एंट्री, 2 और 3 एंट्री मैक्स पूरे हफ्ते में यू गेट इट। सो अगर एवरेज भी पकड़ोगे मंथली, यू माइट टेक 9 और 10 ट्रेड्स, दैट्स इट। अगर आप 3 पेयर को मिलाते हो तो उसमें भी आप 10 ट्रेड्स करोगे तो दैट्स अ चांस दैट 30 ट्रेड्स। अब नाउ उसमें से हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स को जाओगे तो वो हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड होंगे 40%। ओ गॉड, M1, 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 जस्ट लीव इट, लीव द M1। आई एम सेइंग दैट, लीव द M1 for a success। If you want a success, just leave the M1। I'm saying that it's a fact, it's a true fact, just leave that।
switch to at least M5 or M15, because M1 is more of a negative. H4 medium and 15 M1 entry. M1 entry, just forget the M1, because everything is aligned with my type of trades, my type of strategy. Yes, my objective, for me it's H4, same as for you. For a POI selection, for me it's M15, it's the same for you. But I must say, don't go for M1 entries, go for M5 like I do. Yes, I take a loss, but the loss are so small than M1. और I can add one thing is that H4 के बाद H1 के POI को भी consider करो for for high probability to get entry, और M5 में you take an entry, वो best रहेगा. My suggestion, because I have taken so many losses, I must say. मतलब very recent time I just uh, यस आई अंडरस्टूड. बट अगर आप H4 के POI मिटिगेशन के बाद M15 का कंफर्मेशन लेने के बाद ही अगर आप M1 में जाते हो तो दैट विल बी गुड. बट M1 में बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अगर आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दैट यू हैव टू चेंज इट कम्प्लीटली, बट इफ़ यू हैव अ डाटा दैट सेइंग दैट यू आर टेकिंग सो मेनी लॉसेस, whatever the profit that you're making, you're giving back to the market, that means you have to give it up, because it's the same thing has happened to me. um, the more of a profit I make, uh, next week or next month I might give it back to the market again. So वो मेरे साथ बहुत हो रहा था. Yes, add H1. H1 are some of the best confirmation you might get it. Don't rely on M15 directly, because वो बहुत ज़रूरी है. It's add on it, वो आपकी मर्जी है, बट ट्राई, आपको दिखेगा वो. मतलब अगर इफ़ यू H4 में इफ़ यू सी योर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद H1 में जाओ and make the POI, and then you go to M15 and see the H1 stack to M15, and then you see on M1 confirmation whatever you want to see, then you take it. It might be a great one. But I'm saying from my experience, for me M1 is a killer, not not on a profit way, but on more on a drawdown way. So it kill me most of the time. So yes, there are some people who are making lots of money on M1, but I'm saying it, if you are going to be a long term trader, M1 is not good for you. और I mean, see, M1 के लिए आपको completely चार्ट पे होना पड़ता होगा most of the time. If you are if see, the thing is that it's simple. H4 का mitigation हुआ, M15 का mitigation हुआ, then on M1 you have to see completely surrender to the chart to get your confirmation, because M1 में बहुत सारे manipulation at the same time होते रहते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है टू कैच ऑन इट. सो आई एम सेइंग इज जस्ट ट्राई टू गिव इट अप, गिव इट द M1. फ्रस्ट्रेशन आधे से ज़्यादा 50% फ्रस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा. बहुत ज़्यादा बोल दिया तो रोज़ा लग जाएगा. आई होप जितना भी मेरे एक्सपीरियंस है मैंने तुमको आंसर दिया है, यू गेट इट. सो जस्ट चैट में लिख दो सो दैट आई नो कि आई एम on the same path that you are trying to ask me. So what happened is, market, what it did, it managed to sweep all of this, and I think it swept this one as well. I guess I have to see this. Yes, it swept all of this, and I need to see the mitigation at least for H1, so that I can think about to take an entry for a long or for a short. But I need to see this H1 mitigation first. Yes.
लैग्स बहुत हो रहे हैं, so I think I have to close the session now. जो भी होगा you just put it on, देखो कितने लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं. चलो guys, we'll see you tomorrow. Not tomorrow actually, see you on Monday, but tomorrow I will upload the video that I was planning for few weeks, and hope you guys like that video and get some value from that. And the giveaway thing, the giveaway task will be, you will see on the video that what I want you guys to do it so that you can get the prize and get the giveaway. Okay, so now I have to shut this session now, and we'll meet you directly on Monday. Okay.